Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well. Hope you're staying healthy, you're staying safe, and you are rooting for Sushant Singh Rajput and you're boycotting Bollywood. आज का ये वाला सेशन छोटा, sweet, a little poking again, simply because बहुत सारे ऐसे लोग हैं, especially Bollywood industry से have really taken us फॉर ग्रांटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत देर से ये लोग समझते थे कि हम लोग पागल हुए हुए हैं इनके नशे में, और मूवीज के लिए तो हम मरे जा रहे हैं. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोगों में इतनी होड़ होती थी, ब्लैक में टिकट्स होती थी, और क्या क्या नहीं. I've been been part of that game as well. हमें भी याद है, कॉलेज, स्कूल, इवन स्कूल डेज में भी, वी यूज्ड टू गो टू मूवीज, बट कॉलेज टाइम में हम कॉलेज बंक करके मूवीज को देखने जाते थे. कुछ हमारे फेवरेट स्टार्स होते थे, द सो कॉल्ड स्टार्स, जो आज की डेट में एक एक्टर कहलाने लायक भी नहीं बचे. वो लोगों को हम देखने जाते थे, हम उनके ट्रेंड्स फॉलो करते थे, हम उनके नक्शे कदम पे, चाहे कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, हरकतों से लेके, बातों से लेके. आई स्टिल रिमेंबर हाउ आई वांटेड टू लर्न गिटार. अभी भी मेरा गिटार उस तरफ पड़ा है, यहाँ पर भी आके मैंने गिटार सीखने की कोशिश की थी, जस्ट बिकॉज one of my favorite actors at a point of time was known to play guitars. It is absolutely Gutterwood, absolutely Indrajit. It is druggy wood कहें, gutter कहें, इसको तो जो भी कहें. और अब the good thing that has happened is हम सब की आंखें खुल चुकी हैं. We have seen all the nonsense these guys have been doing for a very long time, जो पहले हम शायद नजरअंदाज करते थे. बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे हैंडल्स आ गए हैं. One of my favorites is Gems of Bollywood, who has literally exposed every single thing that this Gutterwood has been doing. चाहे वो हमारे भगवान से related mocking हो, हमारे religious beliefs, हमारे religious faiths के बारे में मजाक उड़ाना हो, यहाँ तक कि इन्होंने तो मूवीज में हमारी को दिखाऊंगा जहां पर they have really crossed all their limits. And the good part, like I said, is we are actually awakened now. We are boycotting them left, right, and center. We are not leaving any stone unturned. चाहे वो बड़ा सा बड़ा खान हो, कपूर हो, कोई भी हो, कुमार तक हो, people who have built mountains of wealth, अपनी पुश्तैनी, वो कहते हैं ना, पुश्तों के लिए भी अपनी सेविंग्स कर ली हैं इन लोगों ने हमारे पैसों से. The same people are now begging in front of us. And the good thing, चाहे वो भीख मांगे, चाहे वो कुछ भी करे, I don't think the trend is going to change. And the trend speaks for itself. चाहे वो ट्विटर ट्रेंड देखें, चाहे वो सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखें, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखें, वहां पर भी यही चर्चे हैं, यही बातें हैं कि किस तरह से कोई मूवी के आने से पहले ही उस मूवी का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है. पहले होता था कि प्रोमोज आते थे, प्रमोशंस होती थी, उसके बाद कुछ वर्ड ऑफ माउथ से आती थी, और उसके बाद मूवी का स्टेटस पता चलता था कि वो मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी. अभी तो प्रोमोस की तो बात ही छोड़ो, प्रमोशंस तक तो बात ही नहीं जाती. अभी तो सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि किस स्टार एक्टर बॉलीवुड के चर्सी की मूवी आ रही है. नहीं देंगे लाल सिंह चड्ढा, क़यामत से नहीं देंगे लाल सिंह चड्ढा. यप, बीकू मात्रे बहुत अच्छे ट्वीट करते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है messages. So we'll talk a little bit about that as well. We'll talk about a lot of things, and I'll try my best to keep it short and sweet, जैसे कि आप सब हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं. But first of all, a very very warm welcome. Hello, hello Yash, hello Suparna Roy, hello Dharma ji, hello Manjeet ji. हो रहा है महाराष्ट्र में, आप कहाँ हो? मैं यहीं हूँ मंजीत जी, मैं कहीं गया नहीं था, बस छोटी सी एक
Personal commitment की वजह से I was away, but now I'm back and I am back with a bang. I'm gonna continue talking about everything, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो इंडिया में कहीं पर भी हो, स्पेशली अगर वो बॉलीवुड और इन सब से रिलेटेड है, तो you will definitely find me around that. Hello Varuni, hello Prakash Maliji, hey Judy, hi RS, hello, and Indrajit ji, welcome, hello Ayush, hello Rajoy ji, good. Yes, I will share the link in few minutes. I will definitely, let me just play some clips and then also talk a little bit about that. Hello Satish ji, Jai Shiv Shambhu, and Sabko hi Jai Shiv Shambhu. And to everyone else. Okay, sir, you know what? Because you're requesting, I'm going to give you the link. I'm going to give the link to everyone. I know everybody is busy and morning time. So here it is. I have posted the link. Let me see if I can pin it as well. I would love for people to join and share their experiences as well, but pin it as well. 1 second. Sorry. All right. Let me just pin this now. And here we go. All right. So we will continue talking while I wait for Rajoy. And Rajoy, feel free. Hello, Sydney, Emmanuel. Hello, David. Hello, everyone. And let's start. So सबसे पहले तो obviously, hi Siddharth, just came today here. Thank you for joining. And पागल लोग हैं जो मूवी देखने जाती हैं. पागल कहें या they've I'll tell you, मंजीत जी, मैं एक चीज बताता हूँ. अभी मैंने जब ये सेशन का पोस्ट डाला, तो the moment I posted it, a very good friend, a very good and a very genuine person in Bay Area, he pinged on Facebook. वहां पर उन्होंने मैसेज किया, like इसको क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, इसके तो मैसेजेस, इसकी तो मूवी में बहुत अच्छा मैसेज होता है. Okay, I see Yash here. So let me just take him in. Hello, Yash. Good morning. Good afternoon. Very good. Good evening for you and good morning, Varun bro. Yes. How are you? Please go ahead. I'm good. Okay. We'll talk about a few more things, but yeah. So the point I was trying to make was a very nice, very genuine, and a very pro Bollywood person, because he's composed songs and he's a musician himself. He does amazing work, and I've seen his work both on social media as well as all the different platforms and he performs as well on live shows as well. He asked me a very simple question that Amir Khan's movies always have some message. This is the problem that we all have. हमने एक bias बना के रखा हुआ है. We know that there are certain people who kind of do certain movies and they leave a message, but we ignore what they do on the side. Becoming a public figure, becoming somebody famous, doesn't mean you can abuse people, you can abuse a religion, you can abuse or do anything that you want. That fame, sense of responsibility, and that's what when people forget, it's our responsibility to kind of show them what their space is. So let me just first take Rajoy as well. I know he must be busy, so hello Rajoy, and welcome. Welcome Varunji. Can you hear me clearly? Yes, loud and clear. Okay, thank you for giving this opportunity, because after 9:30 I have to literally run. So I'll make it very short and simple. Thank you for allowing me. Sure. Secondly, I'll talk about two things. First of all, for all the SSR warriors who are with you, who are with many, right? Let us not get excited about the arrest which has been made. Because these people they come from a different world because of money. Money power plays a very important role here. So maybe 5 days, maybe 7 days he will be in jail, then he will be out on bail, and then again the dates after dates will happen. So our main aim is to get the culprit who had killed SSR. True. These people they did not kill SSR, they were part of a nexus. Yep. So they are also a culprit. But we should not get very much excited that justice is being done. Justice is still awaited.
it's going slowly. It's going. People who have been against SSR, they are getting trapped. But destiny boliye jo bhi boliye aap, huh? But our SSR warriors should not get at all excited that something is very big has happened. Nothing big has happened. It is Yeah, one of the process which is going on. Big will happen when all the 5 people who killed him, they are behind bars, and true. that too for a long time. Either they are penalized for a year, they go for a life imprisonment, or they are hanged. Probably, though in our country, hanging probably there will be a lot of people. Human rights will come in, and they will do a lot of things. So, Yeah, but justice will only on that day. We all SSR warriors will be happy when we see all that 5 or 6, whoever those 6, we know the names very well today. It is even we can bring out a book on what happened on that day. So exactly. let us not get excited, let us keep our patience on. And secondly, coming to this movie, now a very strange thing has happened. Like, for myself, I'm from my point of view, I will say, out of the 3 Khans, this was the Khan whose film I appreciated from day one, because it was different. But in the last 2 years, I understood that yes, though he has made some good films, but actually he belongs to that nexus Same kebab. where they can do anything to stop a newcomer to come. So for me, Amir Khan, maybe he has done good films, maybe he has done different films, but for me, this movie has to be boycotted to a certain extent, that he will realize and he will think twice before making a next movie, because he generally makes one movie in 3 years time, or 3.5 years time, 4 years time. Something like So that. this Yeah. movie has the mission which we are on. Good that it is already on trend. I have heard saying that he's begging in different medias that people should come and watch this movie. So this wouldn't have happened. At least he realized that there's something going to happen with this movie. So that's why he's and PR media is doing all measures to bring the people to see his movie. And I'm sure, as we the this Rishi Kapoor's son's movie was literally washed out, Yep. this movie will be washed out. True. So obviously, from my family end, we are not going to see that movie. And I'm sure my SSR warriors who are joined this group or who are in different groups, they will also boycott this film. Thank you, and that's all. Yeah. Thank you so much. Very well point. Very well said, and brought all the good points. And that's what we also intend to do through different sessions around. चाहे ये रक्षा बंधन जैसे मूवी बनाए, चाहे ये हमारे किसी भगवान के ऊपर मूवी बनाए, चाहे हमारे किसी आर्मी, मिलिट्री, पुलिस ऑफिसर किसी पे भी बना ले, हमारे हीरोज के ऊपर बना ले. End of the day, we have to show them the real face, their real face, that they have been uh, misguided. हमारे में से बहुत सारे अभी भी हैं जो अभी भी अंधभक्त बने हुए हैं, अभी भी मूवीज देखने जाते हैं. I don't know if they are genuinely like खाली है दिमाग से, या they are paid people or they have nothing else to do in their life. पर उनके लिए भी मैं कहूंगा जिनके पास कुछ और नहीं है और वो सोचते हैं कि चलो टाइम पास करने जाते हैं. Trust me guys, YouTube is a free source of entertainment जहां पर आप कितना कुछ आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं. Do your own stuff. I see so many spiritual leaders. I saw so many वो जो पढ़ाते हैं, they are on YouTube right now. I've been a very big fan of this UPSC exams की जो training courses हैं, उनके बहुत It's वीडियोस हैं. very And good. they are interviewing candidates who hold some kind of rank. So these are like mock interviews. और मैं उसको बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ में भी प्रोपेगेट करता हूँ लोगों के बीच में. I encourage you. There is Drishti. There are many more such brands or YouTube channels. Please go listen to them. The kind of questions from history, from geography, from physics, chemistry, every and not only that, वो आपके जिले की कोई गवर्नमेंट या छोटी वो जो पंचायत rules, regulations,
हमारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमारे लीडर, आई मीन दे कवर एवरी सिंगल थिंग. Please go and spend some quality time there instead of wasting your time on Bollywood movies. And Yes, Vijay. Varun, last but not the least, Sure. you, do you in your session just put this question once, that in the last 2 years, those like me, like you, like many, like millions who have boycotted films, if they take a pen and a book, the expense they have saved, Oh, just make a rough seriously. calculation. Yep. Arey, I can give you, In 2 let me years do this. or 24 months, Yep. And I'll tell you because this I did it. Why randomly. I made this point? Yeah, $12 on an average for one person. Okay, $12, one person, one Yeah, movie. Okay, I'm not adding any popcorn and all that stuff, right? चलो अगर उसको भी डाल लेते No, हैं, that let me also just should do be added. That right. should also be That's added, what I because thought. when you go there with a family, minimum in a mall in India, say it is Delhi or Kolkata, whether it's Bangalore, it is $3,000. $3,000 Yeah, average. I'm saying an average for a family of four. Yeah. It's not two. It's a family of four. So you divide it. So correct. and the number of films and the number of days. Yeah. Imagine अगर मैं 12 It's movies भी huge. देखता हूँ, on an average, अगर मैं एक मूवी एक महीने में देखता हूँ, right? मैं बहुत रहा हूँ, On the ऐसा lowest होता side. नहीं है. On the lowest side. On the the lowest lowest side, side, you're I'm saying, on a Yeah. lowest side, I would have saved, on a family of four, I would have saved $1,000, 1,100 something to be specific, $1,140 on an average in 1 year, just by एक movie per month. There are days, there are times when we used to watch 2 or 3 movies per month. There used to be times when we had to take the kids for every single, कोई भी ऐसी movie आती थी, ले जाते थे. So on an average, we are looking at about, let's say average, $1,000. Now $1,000 अगर मैं आज के हिसाब से भी लगाऊं, चलो average लगाते हैं 75. It's 75,000 rupees that I was dumping on And them. on the lowest side. You're taking And this the on the lowest lowest side. Exactly. तो सोचो, और ये मैं एक family of 4 की बात, यहाँ पर we could have look at the number. Absolutely, you're spot on. It is. और यही पैसे अगर हम ये जैसे कहते हैं कि दान दे देने चाहिए, तो इन्हीं के पैसे जो नहीं हम मूवीज पे देते, इनको दे देने चाहिए दान में, तो शायद हमें पुण्य भी लाखों करोड़ों का मिलता. Shame on these people. Thank you. Seriously. Thank you so much. Thank you. All right. I have Yash again. Yash, you wanted to share something. Please go ahead. Actually, to say the truth, to all the SSRians, you guys are really winning. The reason is because most of the Bollywood stars are coming to South. I'm shocked to see Shah Rukh Khan is doing a movie with a Tamil director. 15 years back, he said to a press saying that I will not be making Tamil movies. But today, these guys are coming to South. Ranveer Singh had a big launch in Tamil Nadu, and everyone was asking, you know what, who's this guy? I was laughing seeing that video and see how they are making them. I mean, they are pushing themselves because they know. Boycott Bollywood is happening, and whenever I see a Bollywood star in Chennai for a movie launch, I'm like shocked. They never come, Varun bro. They never been here before. They never used to even. You see this movie RRR Triple R, which Alia Bhatt was acting. What did she do there? She just came to show a face. Listen, guys, I'm a Bollywood. I'm also famous there, but no one respected her. This is the truth. And but what my guys, we Tamilans are. We welcome everyone, but our Tamilans should also know that these guys are not normal people. They will spoil the industry. Yep. And I was shocked, Varun bro, to see a famous Tamil director is remaking a movie with Shah Rukh Khan, and the same Shah Rukh Khan said 15 years back, no, I'm happy with Bollywood. Now, why you all are coming here then? So, the best thing is that hashtag boycott Bollywood and a lot of SRNs who are exposing the truth,
this is happening. And they're going to Telugu, they're going to Malayalam. I don't know. I think very soon they will also go to Chinese, Japanese, because they'll not have even movies in India. Rightly Yeah. said. Very Let rightly me said. let me share something, Yash. This movie Rocketry that came, right? I heard, and I don't know if or not, but I heard Shah Rukh Khan literally begged, Mm. that he could be part of this movie, and most probably he didn't even charge money because Mm. he's been having a kind of a flop streak for a very long time, so he And another knew. flop Yeah. 4 will come. Don't worry. Really, Madhavan, he who is right now in news for all the good reasons, right? For Yes. his son, the kind of upbringing he's done for his kids, all that Absolutely. stuff. So this was a good opportunity for this, whatever Khan, to show his side, and he did this movie, and the whole thing was set up to accommodate Shah Rukh, and this is what he does And one right more now. thing, Varun, he Yeah. made it since he knows that his image is is on the rocks, right? So he told there was no publicity that Shah Rukh Khan. But very later people came to know that Shah Rukh Khan has a role in it. So there was not a special appearance. पहले क्या होता था? Like a movie called Andha Kanun. Amitabh was a special appearance. Amitabh took the movie, means for 15 minutes became 45 minutes. Yeah. Here Shahrukh Khan knowing that अगर इसका publicity होगा Shahrukh Khan, then this movie will not be watched. Yeah. So he made a Exactly. request that my name should not come out that I'm acting in this movie initially. Eh, True, very true. true. And we didn't even see him that You much. I know, mean, on the promos and all. Sorry, go Varun ahead, bro. Yash. Recently there was a launch in Bombay. They wanted to bring Vijay Devagowda, something like that. There was some YouTube channel was spreading room. I mean, that should be the truth. I'm sure he doesn't have fans there in North Side. He's from Telugu. He's done a lot of beautiful movies, and he's a good actor. It seems they brought a lot of fake fans so that they want to show people that even people from South is coming to Bollywood, So that and that absolutely was rotten news. exposed. Wrong news. Wrong Yeah, news. Yeah. yeah. That when that was there, a lot of people were saying, why these guys are coming here. Bollywood already has so much of talented people. There are some YouTubes and all, they're making videos. But the funny part is, I am so proud to see this hashtag. Once upon a time when this hashtag started, I was thinking like, "Arey yaar, I think this is not going to work." But to be honest, it is working big time. It is working, and Sridevi's husband is doing 5 movies in Tamil Nadu, in Tamil, in Tamil with Tamil actors. When I spoke about that one day, people start firing me. You know what? You're bullshitting. You know what? You're bullshitting. Arey yaar, wait and watch. Tumhara din Let's wait and aayega. watch. Wait. So this is Wait what is and going to watch. happen. So, but yeah, Oh, and now let me show. The reason why I really also wanted to do this was, uh, let me just take you directly there. This is one of the initial things that started, right? Let me just play this in. Hopefully, it will open in the same screen. No, it did not. Listen to this BS. Oh, there is no audio, right? Can you guys hear? No. No, right? Oh, 1 second. What happened? she is a mute. Okay, give me 1 second. Let me see. But one Okay. thing, Varun, in spite Yeah. of the fact that Rocketeer movie was a good movie, subject-wise, the real picture came out also. But sorry, I will not go and see that film. I'm not taking the credit from the film. I've read the reviews. It's a good movie, very well acted by Madhavan. But sorry, I cannot go. Then, sir, I think it's better you see it in Tamil. Yeah, I am ready to do that. I'm ready to do that.
But that, even this the main it was based on the scientist, how much he faced, and he really went through a lot of things. But yeah, Absolutely. Hindi. There's no doubt about that. Yeah. Okay, let me just play this. This was what it all started in 2015. That have taken place recently, and the fact his wife Kiran Rao even suggested they should probably leave the country. He was speaking at the Ramnath Goenka Awards ceremony in the capital. I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. You're wrong. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Okay, so the same guy is now requesting something else. Let me just. So this is Amir's another. wife initials was, if I'm not wrong, is from Kolkata. So she will never come up and say this to her husband that I'm feeling. This is all being cooked up by him. Correct. This is, as per my understanding goes. I may be wrong also. And you're right, because I'll tell you, there was an interview. I don't have the clip right now, but there was an interview, Aaj Aapki Adalat, with Rajat Sharma, where Rajat Sharma asked Amir Khan this question, that why did you do this? Why did you say that? And what happened when you went back home? He said, बहुत मार पड़ी घर जाके बीवी से, क्योंकि बीवी का नाम क्यों लिया? So in a way he was saying कि बीवी ने बोला नहीं होगा या होगा, वो तो अलग चीज थी, but he bullshitted on that channel, he bullshitted on that platform, and then he really got something from the wife. And now the same Amir Khan, his tone has changed, because for his movie he said, बॉयकॉट पर बोले आमिर खान, कहा मुझे देश से प्यार, प्लीज बॉयकॉट ना करें। खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज से पहले ही ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। वजह है नेगेटिव। दरअसल इस फिल्म को लेकर ट्विटर पर कई फैंस इसे बॉयकॉट करने की मांग करने लगे हैं और बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा वायरल हो रहा है। अब आमिर खान ने इस ट्विटर ट्रेंड पर रिएक्ट भी किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर उनकी इस फिल्म को बॉयकॉट करने वाले यूजर्स का अब भी मानना है कि उन्हें भारत में रहना नहीं पसंद। हालांकि अब आमिर खान ने अपना सुर बदलते हुए कहा है कि उन्हें इस देश से प्यार है और फैंस उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट ना करें। आपको याद दिला दें कि एक बार फिर आमिर खान का वो पुराना इंटरव्यू चर्चा में है जिसमें उन्होंने इंटॉलरेंस वाले मुद्दे पर कुछ बातें कही थी। अब आमिर खान ने अपने उन्हीं फैंस को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उन्हें अपने देश से प्यार है। उन्होंने कहा, प्लीज मेरी इस फिल्म को बॉयकॉट ना करें, मुझे अपने देश से प्यार है। हाल ही में एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया कि क्या हेट या फिर बेफिजूल की ट्रोलिंग उन्हें परेशान करती है। इस पर एक्टर ने कहा, जी हाँ, मुझे दुख होता है जब कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वे मानते हैं कि मैं उनमें से हूँ जिन्हें इंडिया नहीं पसंद। वे दिल से ऐसा मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये वाकई दुखद है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसी बात है ही नहीं। प्लीज मेरी फिल्म को बॉयकॉट मत कीजिए, प्लीज मेरी फिल्म जरूर देखें। इस फिल्म में आमिर खान के अलावा करीना कपूर खान, नागा चैतन्य, मोना सिंह जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं। अद्वैत चंदन की बनाई यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये फिल्म 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। बता दें कि आमिर खान ने असहिष्णुता वाले मुद्दे पर तब कहा था कि देश में असुरक्षा और डर की भावना समाज में बढ़ी है। यहाँ तक कि मेरा परिवार भी ऐसा ही महसूस कर रहा है। मैं और मेरी वाइफ किरण ने पूरी जिंदगी भारत में जी है, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझसे देश छोड़ने की बात कही। उन्हें अपने बच्चे के लिए डर लगता है। उन्हें इस बात का भी डर है कि आने वाले समय में हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा। वो जब अखबार खोलती है तो उन्हें डर लगता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अशांति बढ़ रही है। आमिर के इस बयान के बाद से उनकी और उनकी वाइफ किरण
राव की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। काफी लोगों ने उन्हें देश से बाहर जाकर रहने की सलाह भी दे डाली। मतलब इस नेगेटिव ट्रेंड का आमिर की फिल्म पर क्या असर पड़ता है, ये तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ओपनिंग ही बताएगी। वैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस नेगेटिव पब्लिसिटी का आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को काफी फायदा मिल सकता है। बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी से जुड़ी और भी इसी तरीके की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड। और इसी के ऊपर लोगों का दूसरा जो गुस्सा था वो था अराउंड दिस, एंड विच वाज वेरी ऑब्वियस, यू नो, दिस nepo kids, especially, you know, ये जो कपूर्स एंड खान्स, audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this, it's just like, I just find this whole discussion is completely weird. बाइकआउट करना ही है, करीना कपूर है उसमें, वो तो उन्होंने कहा ही था कि आप लोग देखने आते हैं इसीलिए हम लोग हैं मूवी में, तो ठीक है बाइकआउट कर रहे हैं हम। कोई नहीं जाएगा देखने के लिए, करीना कपूर की कोई मूवी आएगी हिट नहीं जाएगी, और आमिर खान भी ऐसे भी आपको पता ही है क्या क्या बोल चुके हैं। वो यहाँ पे वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है इंडिया में, उनकी वाइफ सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो ठीक है जब सुरक्षित नहीं है तो फिर मूवी क्यों यहाँ बना रहे हो, मूवी जाके विदेश में बना। ये बहुत मीम्स चली, बट वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल एंड एक सेंसिबल एक और ऐसा वीडियो क्लिप जो बहुत इस टाइम पे वायरल हो रहा है, एंड यू नो दिस गाय, ही हैज बीन अ फेस ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, एंड टाइम हेल्प की थी. Just listen to what, and this clip has really gone viral. बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा. आमिर खान ने अपनी मूवी में देवी देवताओं का अपमान किया और भारत देश को लेकर अपशब्द कहे अपनी एक स्टेटमेंट में. मैंने ये सिर्फ सुना था, ये सुनकर मैंने आज पहली बार ऑनलाइन आमिर खान की पिक्चर पीके देखी. देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे इतना दुख लगा कि घोर अपमान देवी देवताओं का उस पीके पिक्चर में आमिर खान ने किया. एक ये सीन देखिए आप, जहाँ ये एक दीवार पे यूरिनेट कर रहा है. ये यूरिनेट कर रहा है और इसका जो नीचे सूटकेस पड़ा है उस पे भोलेनाथ की, शेरावाली माता की और भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी हुई है, और प्रॉपरली उसको ये दिखा रहे हैं जूम करके कि देखो यूरिनेट कर रहा है और वहाँ पे फोटो लगी हुई है. इस सीन का रेलेवेंस क्या है? इससे इनकी गंदी मानसिकता का, गंदे माइंडसेट का पता चलता है. ये दूसरा शॉट देखिए, मंदिर के अंदर चरण पादुकाएं पड़ी हैं और ये आमिर खान उठा के चलता बना उसको पहनकर. इतनी जरूरत कोई कर सकता है? वो कोई चप्पल नहीं है जो आप पहनकर चलते हैं. उन्हें प्रभु के मंदिर में रखी हुई प्रतिष्ठित चरण पादुकाएं हैं भगवान की. तीसरा सीन देखिए, कैसे महादेव भोलेनाथ का अपमान कर रहा है. छोटे छोटे बच्चे मालूम है हमका, करेजी और कार्तिकेय इतने छोटे भी नहीं है. पहले पिक्चर में देवी देवताओं का घोर अपमान किया और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मेरी वाइफ कहती हैं कि भारत देश का माहौल सेफ नहीं है और इन्हें डर लगता है. इन्हें भारत सेफ नहीं लगता तो क्या अफगानिस्तान सेफ है जहाँ रोज बम फटते हैं? बीइंग अ प्राउड इंडियन, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आओ मिलकर इनकी आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें. बॉयकॉट इसलिए कि देवी देवताओं और भारत देश का अपमान करने वाली जो ये मानसिकता है उस पर लगाम लगे और कोई दोबारा ऐसे अपमान करने की हिम्मत और जरूरत ना कर पाए. और करीना कपूर खान तो खुल के कह रही है मत देखने आओ, तो मत देखने जाओ. आओ मिलकर इनकी इच्छा पूरी करें. लाल सिंह चड्ढा को इनकी पिक्चर पर हजारों रुपए बर्बाद अपने फूकने से अच्छा है उन पैसों से आप किसी जरूरतमंद आदमी का पेट भरें, किसी गरीब का इलाज कराएं, आप मंदिर में, गुरुद्वारा साहिब में दान करें, जो मानवता की सेवा, देश और धर्म के काम आए. देवी देवताओं का और देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. बहुत भारत माता की जय. भारत माता की जय. बहुत सही कहा. और एक और ऐसा ही लास्ट में वीडियो प्ले करूंगा. यू नो इस बंदे ने थोड़ा सा, एंड अगेन आई अपोलोजाइज, एक दो वर्ड्स यूज किए इन्होंने इस वीडियो में, बट यू नो आजकल मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी रियली नीड पीपल लाइक हिम टू टॉक ओपनली, ऑनेस्टली, कैंडिडली
And here we go. और कपिल शर्मा उस कुत्ते को बोलना चाहता हूँ जिसने इसका प्रमोशन करने से मना कर दिया था, कश्मीर फाइल का। उस कुत्ते को बोल रहा हूँ, एक कपिल शर्मा, तुम जितना करना है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को बढ़ा दो, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ कि इस कुत्तों की मूवी मैं नहीं देखने वाला हूँ। नेहरू चाचा बना हुआ था, गांधी बना हुआ था, जब यहाँ से पंडितों को भगाया जा रहा था तब तुमने हस्तक्षेप नहीं किया। आज मैं तुलना करता हूँ, आज भारत अलग बन चुका है। हिंदू बटे हुए थे, हिंदू को हिंदू नहीं मानते थे, तुम जाट, तुम ब्राह्मण, तुम वैश्य, तुम शूद्र, तुम चमार, तुम भंगी, तुम ये। आज जब सारे मिलके हिंदू हो गए हैं तो सालों को पच नहीं रहा है। Well said. So this is, guys, the mass awakening that has happened. सारे के सारे लोग, अब ज्यादातर लोग जाग चुके हैं, उठ चुके हैं अगेंस्ट दिस कबाल, जिस कबाल की हम बात कर रहे थे कि ये सारे किसी ना किसी कबाल का पार्ट है, चाहे वो ड्रगीज, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, एवरी सिंगल। और बॉलीवुड के अंदर तो वैसे ही बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, गैंग्स बने हुए हैं, जिसका शिकार ऑब्वियसली सुशांत भी हुआ। और आज की डेट सब पे उतर आए हैं और हम यही चाह रहे थे। लास्ट मुझे याद है 1-1.5 साल पहले मैं बोलता होता था कि आई वुड लव टू सी देम लिटरली बेगिंग कि भाई हमारी मूवीज देखो, और आज की डेट में वो होता हुआ दिख रहा है। आमिर खान लिटरली बेगिंग कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और कुछ लोग उन्होंने गलत इसको समझा, बट आई रियली डोंट वांट you to support my movies. Just Yes. Before I take a leave, Yes. I think the SSR warriors will also have the same, will echo the same feeling. There's some literally, even after 2 years, Sushant is no more with us. Means he's with us, but physically he's not with us. Yeah. The divine power is still working. It's unimaginable. It has never happened on this earth that someone died and then after effects, what is happening? If you see from the day he's no more on the earth and today, still people have not forgotten him. Absolutely. So he must be special. He must be something which we could not realize, or it's we are unfortunate that we could not, when he was there, we could not understand his power. Correct. That's the most unfortunate part. We didn't even realize. Absolutely. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much, Joy. Nice talking to you after a long time. Take care. Yeah. Take care. Bye. All right. Bye-bye. So yes, absolutely. You know what Rajoy said, we all feel that. Spiritual power जो है सुशांत की, चाहे वो बॉलीवुड के अगेंस्ट हो, चाहे वो बॉलीवुड के क्लीन अप के लिए हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी की क्लीन अप के लिए हो, जिस तरह से ये सारे के सारे संजय राउत के साथ जो हुआ, जो इतने सारे परमवीर सिंह से लेके अनिल देशमुख, यू नेम इट, सब लोग इस टाइम पे जो कि सपोजिडली बहुत पावर थी, जिनके पास एक ओहदा था, जिनके पास एक रैंक, रोल, सब कुछ था, still they are in jail. They will continue to rot in jail, in hell as well. बाकी भी लोग जितने बचे हैं, ये भी मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक बाहर टिकेंगे। और कर्मा का तो हमने देख ही लिया, it takes its time, but it has really not left any door knocked, क्योंकि इतने सालों तक कुछ हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, कुछ लोगों के साथ कितने गफले करे, कितनों के पैसे खाए, कितनों की फैमिलीज खत्म कर दी, and now they are on street, they are on literally begging कि अब हमारी मूवीज बॉयकॉट मत करो। और ये वही आमिर खान जिसके अभी इतने क्लिप्स आपको जो दिखाए, let me show you one last one. This one is again something which I really found very amusing, that educated actresses या actors भी कहूँ, they let this happen. शर्म की बात वही हमारी ये है कि हम स्टारडम को इतना बड़ा मान लेते हैं कि आमिर खान can do anything. Listen to this nonsense. One more thing he would keep doing to everyone, I guess, the cup. The cup. This is a recurring story. I mean, everyone has memories of. Absolutely. You can't get yourself out of that one. Well, I don't like to tell the story. The cup. I don't like to tell the story. Because when I tell the story, then I can't do it on new people. Yeah, and then there was this. तो mechanics reveal नहीं करना है. There's a whole new generation. You can. उन सबको. He used to say, "Let me read your hand and spit on it and run away."
जिस his latest co-stars of Dangal are raising their hand saying, दोनों के हाथ पे थूका है मैंने. the same thing. 24 years later, he's still doing But the same let me do. Amir, you have to get new pranks now. यार सुनो मेरी बात, मैं वो क्यों करता हूँ? Why do I spit on my heroine's hands? It's very important to know that. जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो नंबर 1 हो गई है. मतलब it's my responsibility to do that. और व्हाट अबाउट सपोर्ट सबके हाथ पे थूका है मैंने, सब नंबर 1. आमिर पर सपोर्टिंग एक्टर के हाथ में थूका, उसका क्या हुआ? क्या I missed that one. सपोर्टिंग एक्टर के हाथ में थूका, उसका क्या हुआ? नहीं, it only works for heroines. Imagine spitting on hands, spitting on food की हमने बहुत पिक्चर्स देखी, spitting on whatever. ये देख लें आप, आमिर खान, the आमिर खान used to spit on every heroine of his. उनके हाथ पे थूकता था, और ये नोशन देखो इनके हिसाब से थूकने से वो हीरोइन नंबर 1 बन जाती थी, एंड he's been doing it forever. And क्या बोले, we are all blind, we are all dumb. सुपर से भी ऊपर फ्लॉप इस फिल्म के, पैसे भी नहीं बिल्कुल. एक अभी कोई मूवी आई थी, मुझे उसका मूवी का नाम नहीं पता, उसमें तापसी पन्नू थी शायद, जिसका मैंने सुना कि उसका टोटल जो इनकम थी वो कोई 4,000 रुपए ही हुए, 4 या 5,000, डिड नॉट इवन क्रॉस दैट. ये हाल होना चाहिए, चाहे वो सुपरस्टार की, चाहे वो किसी की भी हो. आई थिंक दिस इज रियली what needs to happen. Fellow buddy thukias during COVID first time hit. Yeah, thuki. So true, Dheeraj. We had become such a ruined civilization. Now we are rising again. Absolutely, I agree. And I'm so glad कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग बार बार इस चीज को दिखाते हैं, सुनाते हैं, in our friend circle, on our social media. मैंने अभी जैसे शुरुआत में भी बात की, a very dear for whom I have a lot of respect. अभी जब मैंने इस सेशन का क्लिप डाला, पोस्ट किया, he put it on Facebook कि वरुण, इसके तो आमिर खान की मूवीज तो बहुत अच्छी होती हैं, मैसेज के साथ होती हैं. Why are people boycotting it? What is happening? People are not aware. People have not seen all of this. People are very, very much tolerant. Still, अभी भी ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं. But now, no more. Now, I at least जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, जब तक मैं ये सब कुछ करूंगा, I will definitely bring all of these things out again and again. Sometimes it gets a little bit too much. थोड़ा ज़्यादा पोक हो जाता है, but end of the day, we have to poke everyone. Have to share this with everyone. Not everyone is on Twitter. Not everyone is on YouTube. Not everyone is on, हर platform पे हर कोई नहीं होता. So it becomes our responsibility to share such clips, such videos, such snippets with everyone. People don't know कि why Kareena Kapoor is getting so much flack. They should see. ये वही करीना कपूर है जो अपने नाम को लेकर बहुत प्राउड फील कर. ये वही करीना कपूर है जो कहती है कि हमने तो नहीं कहा ना, हमें आप पैसे दो, हीरोइन बनाओ या हमें स्टार बनाओ, आप ही आते हो ना देखने. तो लो भाई, हम आते थे, हम बेवकूफ थे, हमारी गलती हुई, हमने माफी मांगी. नाउ नो मोर. नाउ यू go to hell, do whatever you want to do. We are not sure, Judy. I will try to do that. Even though what we thought earlier that movies are the mirror of, so now we're raising actually absolutely Divyansh. Bilkul sahi kaha. I used to believe that. I really used to see, बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी, चाहे वो लीडर से रिलेटेड हो, चाहे हमारे भगवान से रिलेटेड हो, हम भी बैठ के हंसे थे. कुछ ऐसी क्लिप्स आती थी जहां पर हम शायद मजाक में उड़ा देते थे, हम अपने लीडर्स की मजाक उड़ा देते थे. But how our society needs to be built. Our society needs to have some respect for some people. We need to treat everybody very respectfully. We cannot be treating them like this. So we will. I don't see a condolence message from Amir for Sushant. There was a a message to था, but
again, nobody, very, very few, very rare people stood, especially ये जो top notch जिसे कहते हैं ना, the top tier of Bollywood अपने आप को जो मानते हैं, these guys definitely did not come out the way they should have for Sushant, and that is one of the reasons we really don't want to give them. Hello, Ujwal ji, long time, doing well. Such Thukology experts inspired other Thukology sleeper operators during COVID period all over India. Most was guilty following these idiots 2 years back. Absolutely, and we all. Hey, Rinky, hello. Not Judy, who was not Qayamat se Qayamat tak, and Bazigars and whatnot. Kisne nahi un movies ko bar dekha, Exactly. All these clips should be shown again and again, and that's what we're going to do. All these actors, और हम इस generation की क्या बात करें, we need to go back. वो शहनशाह से लेके जितने भी ये पुराने जमाने के actors हैं, a lot of them abused our gods like anything. और बहुत गलत चीजें कुछ दिखाई गई, again, I'm not getting any kind of sponsorship or whatever, but Gems of Bollywood, do go and watch the Twitter handle. You will see a lot of these things exposed by them. हमारे सामने ये चीजें हुई हैं, हमारे सामने ये चीजें बोलते गए, लोग करते गए, हम हंसते रहे, हम इग्नोर करते रहे, हमने उसको उस नजरिए से देखा ही नहीं. And now we are so much awakened that we really don't want our children, our future generations to see around Bollywood, क्योंकि Bollywood सत्यानाश मार रहा है. I remember last year, some of the sessions जब या कुछ ऐसी mothers आती थी, they used to complain. आके सेशन पे बताती थी कि वरुण, ये हमारे स्कूल के फंक्शन हो रहे हैं, उस स्कूल के फंक्शन में all they can think of is, वो ऐसे गानों पे बच्चों को 5, 6, 7 साल की बच्चों को डांस करवा रहे हैं, जो हम नहीं चाहते ऐसा हो. किसी ने नहीं किया, रिबेल नहीं किया. Nobody stopped because they said, this is छोटे वो जो बच्चे रियलिटी शोज पे, look at the way they are dressed up, look at the way they dance on these Bollywood stupid numbers. अभी भी आज की डेट में भी I know of people who believe, wow, those kids are magical, amazing. Yes, they have the talent. उनको आप सही जगह यूज करो. किस तरह के गानों के ऊपर, किस तरह से the gestures जो हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे दिखाया जाता है, वो 6, 5, 6, 7 साल के बच्चों को फॉलो करवा रहे हैं. Is that how you want to see your kids doing? Stop it. उनको रोको. Change it. You have to bring the change. And एक और चीज जो मैं बहुत सुनता था, किस तरह से एक पूरा generation आया था, and I'm also culprit. I also sometimes used to be in that mood कि वो गाने सुनना, उस तरह के एक particular genre के songs आते थे जिसमें सारी की सारी terminology. I'm not against Urdu. I'm not against any particular religion, but हर जगह वो एक ही तरह के भगवान को घुसाना और एनफोर्स करना. एंड जब हमारे भगवान की बात आती थी तो वहां पर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मॉकिंग, जैसे अभी आपने देखा किस तरह से शिव जी वो पाठकों के लिए और क्या क्या नहीं हुआ. I just wish and pray, Summer, 5 to 10 years, I would say next 2 to 5 years, we should see the biggest downfall ever. And the writer of Raksha Bandhan has also written a lot of things about our culture. Please remember this as well on 11th August and spread the word. Absolutely. अभी तो ये लाल सिंह चड्ढा के बाद हम रक्षा बंधन के भी करेंगे, क्योंकि आजकल मिस्टर रक्षा बंधन कुमार जो है, he is also going very good boy image बना के and अपने फैंस और वो भी सीनियर सिटीजन्स को हक करते हुए पाए जा रहे हैं. ये वही स्टार्स हैं जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा हाई फ्लायर समझते थे और एयरपोर्ट लुक में इधर उधर जाते थे. Okay, I'm gonna add you. Hello, Sanatan Dharmji.
हेलो, सुनाई दे रहा है ना मेरा बात? हाँ जी। देखिए, ये एक्चुअली अवेयरनेस इतने देर बाद आया, यही मुझे आश्चर्य लगा। लाइक ये लोग ऑलमोस्ट लाइक 20, 25, 30 ईयर्स से बैशिंग कर रहे हैं। हाँ, हिंदुइज्म के अगेंस्ट में जो जिहाद है, इनका जो इस्लामिक जिहाद है, वो चला रहे थे और एटलीस्ट आई थिंक 30, 35 ईयर्स, लाइक 30 ईयर्स straight, 30, 35. I think it started somewhere in the late 80s and then it went on. तो ये तो बहुत पहले ये बॉयकॉट होना चाहिए। और जितना भी ये जिहादी खान्स है ना, ये गे खान्स ऑफ बॉलीवुड, ये लोग इतने गंदे हैं। दे हैव नाउ स्टार्टेड एपोलोजाइजिंग, जैसे आमिर खान है, जस्ट फॉर द मनी। और अगर लोग इनको क्षमा कर देंगे, इनको अगर छोड़ देंगे, दे विल डू द सेम थिंग अगेन। दे हैव, बिकॉज वही है जिहाद लाइक जिहाद और तकिया जो है ना इस्लाम में, लाइक दैट व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। उसके लिए आप झूठ बोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग दे आर बीइंग, अभी थोड़ा मॉडेस्ट इन लोगों में आने लगा है, लेकिन डोंट बी फूल्ड बाय दैट। मैं आपका ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि डोंट बी फूल्ड बाय दैट, क्योंकि ये लोग once they start getting the money again, they will do the same thing again. Yeah, they have no repentance, nothing. और बहुत हो गया। आई मीन और पहले और एक प्रॉब्लम था कि देयर वाज नो अल्टरनेटिव, जैसे कि वो टॉलीवुड का मूवीज उतना आ नहीं रहा था। लाइक आई मीन दे वर मेकिंग गुड मूवीज, लेकिन वो डब नहीं हो रहा था, तो पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो अभी ऑप्शंस है। तो ऐसे ही बॉलीवुड अगर आप कुछ न्यूट्रली आप देखें तो मूवीज का जो कंटेंट और जो भी है वो तो बहुत घटिया होता था, पहले से ही होता था। लाइक दे नेवर मेड गुड मूवीज। तो अभी तो जाना चाहिए, अभी बहुत हो गया। एंड वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। अब अपना जो सनातन वुड है, जो 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 टॉलीवुड है, वो देखेंगे। आई डोंट मिस बॉलीवुड एट ऑल। मैं तो एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक 15, 20 ईयर्स मैं देखना ही छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ दिस खान्स एंड ऑल दिस नॉनसेंस। एक्टिंग तो आता नहीं है, सेम मैनरिज्म ओवर एंड ओवर है, कौन देखने जाएगा? आप देखिए ना, आप साउथ के मूवीज देखिए, आप बंगाली मूवीज देखिए, आप रीजनल मूवीज देखिए, कन्नड़ा देखिए लुक एट द थॉट प्रोसेस, क्या क्या बना रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे देखिए वही बच्चों जैसा शादी और ये वो। Sorry, go ahead. या सो यही है। आई मीन तो अवेयरनेस आ रहा है, और अवेयरनेस आ रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, पीपल लाइक एंड लाइक लाइक संजय दीक्षित और नीरज यात्री, जो हिंदू जो सोया हुआ था उनको जगाया इन लोगों ने। तो बहुत अच्छा काम किया ये। तो Exactly. it's good We'll actually. continue, and that's what again, I don't know your name, but Sanatan ji, मैं यही कहूँगा, it is very important हम सबके लिए, और ये सिर्फ मेरी आपकी सबकी नहीं, मतलब हमारी नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें और ज्यादा से ज्यादा प्रोपगेट करें, क्योंकि ये लोगों ने पूरा अपना कबाल बनाया हुआ है। दे आर स्प्रेडिंग, लाइक वो कहते हैं ना, टेंटिकल्स की तरह इन्होंने फैला दिया है हर जगह, एंड हम लोग सब इसके शिकार थे, हम सब। I'm glad you became aware a little earlier than most of us, and I've been the most ignorant. मैं तो कहूँगा, ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2 साल में जो मेरी एक अवेयरनेस हुई है। I seriously feel sorry कि मैंने ये क्या किया इतने साल, कैसा मैं वो अंधा बन के फॉलो करता रहा। I really regret that, but it's never too late. For our future generations, it's very important. I would rather put my kids into some other kind of folk dance, या मैं पंजाबी हूँ, गिद्दा पंगड़ा ये सिखाऊंगा, rather than all this Bollywood dancing on those cheap songs. Look at the wordings भी देखें आप गानों की, वो 6-6, 7 साल के बच्चों को करना। मंदिर का कॉन्सेप्ट ही इन्होंने बदल दिया, मजाक उड़ा रहे हैं भगवान का, और उस मूवीज पे बैठ के हम भी हंसते थे। So we really have some moral responsibility, all of us, and I think luckily, unfortunately, the sad part is कि सुशांत के जाने के बाद, but Sushant became that source of inspiration for all of us. So I think it's a responsibility that we all need to or the role that we all need to play. Yeah, absolutely. और also like पहले ये था कि even like 4-5 years back we did not have an alternative. अपने पास कोई alternative नहीं था। अभी क्या है कि like the way the South they are coming up, and I mean they have already come up. They have already demolished Bollywood. I mean now they are #1 industry, I believe, in terms of revenues and everything. Yep. So
आई डोंट थिंक बॉलीवुड वुड सर्वाइव. मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड का हाल वैसा ही होगा. आई डोंट थिंक दे कैन कम बैक. मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि देयर रन इज ओवर. अभी जो रहेगा वो साउथ का ही ऐसे अच्छे अच्छे मूवीज आएंगे. और क्योंकि देखिए स्प्रेड ऑफ इंटरनेट और यूट्यूब में अभी तो सबको सब कुछ पता है. पीपल नो एवरीथिंग, यू नो, द इंफॉर्मेशन इज देयर. आप अगर एक रीमेक बना रहे हैं ना, तो व्हाई शुड आई वॉच द रीमेक? आई वॉन्ट टू वॉच द ओरिजिनल कंटेंट. और इन लोगों को भी पता चल गया है कि देयर दिस हिंदी मूवी वालास दिस they are making remakes of our movies. So why I'm talking about the South Indian movie makers. They have seen कि अपना ही movie बना के they are making money. So why should we let them do that? तो अच्छा है. I mean now they're finished. They don't have any original writers. They don't have any original content. Nothing. कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास. They are like, you know, कुछ brainless nepotism ये चल रहा है यहाँ. इतने सालों से चल रहा था. So they won't be able to come back. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. आप 5-6 years, within 7-8 years they'll be finished. कुछ भी नहीं बचेगा बॉलीवुड में. Absolutely, and that's what we are all praying and working towards कि मिलके हम इस सब को खत्म करेंगे, सफाई करेंगे, and we will लगता है सपोर्टर्स भी आ गए. लाल सिंह चड्ढा ब्लॉकबस्टर तो पता नहीं बॉस, मूवी रिलीज ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है. Anyways, no, thank you so much, सनातन जी, and really appreciate that. ऐसे ही ज्वाइन करते रहे और इंस्पायर करते रहे लोगों को. That's the most important thing right now. Yeah, thank you very much. Thank you so much. Thank you. All right, before I end this session, I am going to play one last video. ये वीडियो एक जर्नलिस्ट ने बनाया है. उन्होंने डाला था और मैंने उसमें से क्लिप डाली थी सोशल मीडिया पे on Twitter. He responded back, you know, thank you for appreciating, and you know, इसकी पूरी क्लिप उनके YouTube पे है. So I'm going to play it from that. I really appreciate उन्होंने ये जो पूरा का पूरा इंटरव्यू लिया एक तरह से लोगों का. It really was very inspiring and very good. The honest, candid, not made up reviews outside a movie hall. हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ये सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड यू नो वीडियो के मूवीज के क्रिटिक्स और यू नो व्हाटएवर अपने आप को जो ये लोग बोलना चाहते हैं, ये स्टार रेटिंग दे देते हैं, एक्चुअल स्टार रेटिंग देते हैं हम जैसे आप जैसे लोग मूवीज को. एंड दिस इज अ ग्रेट वीडियो, सो लेट्स ऑल वॉच इट एंड सी व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट बॉलीवुड. हियर वी गो. बाइकआउट कर देंगे जो हिंदुस्तान का विरोध करेगा ना. आप जैसे लोगों के पूछने की जरूरत नहीं है. आमिर खान मेरे लिए आइडियल नहीं है. बाइकआउट करने के 100 रीजन है. एक मूवी देखने का एक रीजन बताइए सॉलिड तो समझ में आए. कौन आमिर खान कोई हीरो है? तो ठीक है, जब सुरक्षित नहीं है तो फिर मूवी क्यों यहाँ बना रहा हूँ? मूवी जाके भी विदेश में बना हो जाके. आमिर खान और करीना कपूर खान की एक नई पिक्चर लाल सिंह चड्ढा थिएटर में लगने वाली है और उसी समय #बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड चल रहा है इस समय. अब आखिर पब्लिक इस मूवी को देखने जाएगी या करेगी इसका बहिष्कार, ये जानने के लिए सिनेमा घर के बाहर खड़े हैं और अभी थोड़ी देर में लोग निकलने वाले. उनका राय आप तक रखते हैं. कह रहे हैं लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी आने वाली है. क्यों, क्या कारण है? पर दो, मेरी इच्छा है. बिल्कुल बाइकआउट. क्या कारण है? अरे बहुत रीजन पूछने की जरूरत नहीं, बाइकआउट होना चाहिए बस है. रीजन? कोई रीजन नहीं. आप रीजन पूछने लायक ही नहीं हो लोग, बस. बढ़िया बोलने की जरूरत नहीं. बाइकआउट हम लोग ऐसे ही बाइकआउट कर देंगे जो हिंदुस्तान का विरोध करेगा ना. आप जैसे लोगों के पूछने की जरूरत नहीं है. आमिर खान मेरे लिए आइडियल नहीं है. देखो अभी पृथ्वीराज चौहान देखकर आ रहे हैं हम लोग. हमेशा बाइकआउट होगा. जब बोले ना. बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही बोला उन्होंने. जो भी बोला बिल्कुल सही बोला. भारत माता की जय. आमिर खान की मूवी बिल्कुल आमिर खान कोई हीरो है? बिल्कुल होनी चाहिए. रीजन करा क्या? बाइकआउट होना चाहिए आमिर खान की मूवी. बिल्कुल होना चाहिए. बाइकआउट करने के 100 रीजन है. एक मूवी देखने का एक रीजन बताइए सॉलिड तो समझ में आए. सही. बाइकआउट ही करना चाहिए, सिंपल सी बात. रीजन क्या है? रीजन है वो बंदा आपको सोशल लेवल पे एक रॉन्ग मैसेज दे रहा हो एज अ इंडिविजुअल. आमिर खान इज नॉट अ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी एज ऑफ नाउ. जब था तब था, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल लोग लाइक करते थे, बट अभी करंट में उसकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है जिसपे कि आप ये कहो कि उसको हम फॉलो करें. बट ऑब्वियसली उस बंदे की मूवी क्यों फॉलो करें?
बाइकआउट करना ही है। करीना कपूर है उसमें, वो तो उन्होंने कहा ही था कि आप लोग तो देखने आते हैं इसीलिए हम लोग हैं मूवी में, तो ठीक है बाइकआउट कर रहे हैं हम। कोई नहीं जाएगा देखने के लिए। करीना कपूर की कोई मूवी आएगी हिट नहीं जाएगी, और आमिर खान भी ऐसे भी आपको पता ही है क्या क्या बोल चुके हैं। वो यहाँ पे वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है इंडिया में, उनकी वाइफ सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो ठीक है, जब सुरक्षित नहीं है तो फिर मूवी क्यों यहाँ बना रहे हो? मूवी जाके विदेश में बनाओ जाके। बिल्कुल बाइकआउट नहीं होना चाहिए, और जो लोग ये कह रहे हैं बाइकआउट करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्टैंड दिखा रहे हैं। ये जो देश हित की बात करेगा और जो अपने धर्म के लिए करेगा, अपने देश के लिए करेगा, उसी को हम प्रेफर करेंगे, और जो अपने एटीट्यूड में रहेगा उसको तो बाइकआउट वैसे भी कर देना चाहिए। डेफिनेटली बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी मूवीज आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर कहना नहीं चाहिए धर्म समुदाय को बढ़ावा देके हमारे धर्म को क्योंकि डिग्रेड कर रही हैं। जो लोग निगेटिव बातें करते हैं, देश के लिए जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी निगेटिव बोलेंगे, और अपने उसमें रहेंगे। किसी को देखना है तो देखे, बुलाने नहीं जा रहे हैं तो कोई किसी को नहीं बुलाने जाता है। इतने पैसे वाले बनते हैं तो बनते तो हमारे ही उससे है ना, लेकिन फिर भी वो आम जनता को बेवकूफ समझते हैं ये लोग फिल्मी एक्टर जो होते हैं ना। बिल्कुल होनी चाहिए, सॉरी नहीं है। अपने धर्म की रक्षा हमको करनी है, वो तो हमारे मजाक उड़ाते हैं हमारे धर्म का, हम लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं। आपको बेस्ट पब्लिक रिएक्शन कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है इस बार आमिर खान और करीना कपूर खान की लाल सिंह चड्ढा बाइकआउट होगी या फिर लोग उसको देखने जाएंगे? अपना रिव्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इनको। बट ये थे रियल कैंडिड ऑनेस्ट ओपन रिव्यू या क्यों लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं, एंड वी रियली नीड टू शेयर दैट। यहाँ पर 2-3 लोग आए थे अपना प्यार बांटने, अपने जिनका भी SRK डिवोटी एंड देवस्मिता पांडा जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नमस्कार, एंड आई डिड नॉट इनवाइट यू, सो प्लीज आप वहाँ डिफरेंट चैनल्स पे जाएं जहाँ पर आपके स्टार्स की मूवीज प्रमोट होती हैं। यहाँ अनफॉर्चुनेटली सॉरी बट नो सॉरी। ऑलराइट, आई सी सिमी जी, हेलो सिमी जी, नमस्कार, परफेक्ट टाइम टू जॉइन। कैसी हैं आप? नमस्ते, डबलिन से, आज डबलिन से नमस्ते हेलो हो रहा है। डबलिन से नमस्ते। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो एक पहले तो वो टर्की को टर्की भेज दो ना, टर्की खाने। Exactly. So somewhere I heard that he might even send his kid or kids to educate them there, and फिर ISIS के बात बता रहे थे कुछ involvement, so हाँ, तो bad things, but good thing है, जानिसार गाएंगे हम अगर आप बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ठीक है। And before you sing, I'm gonna say good night everyone. Thank you so much for joining. And हम खत्म करेंगे obviously सिमी जी के इस before सिमी जी does that, I see आयुष join, तो आयुष को सुन लेते हैं और उसके बाद सिमी जी के गाने पे हम खत्म करेंगे सेशन। हेलो आयुष। हेलो, नमस्ते आप दोनों को। नमस्कार। अभी देख रहा हूँ कि तो कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ गधेड़ सब आ गए हैं अपने अपने स्टार्स को प्रमोट करने में। Exactly. पहले बात तो भाई तुम लोग हो क्या चीज, ये पहले बताओ। तुम लोगों को असलियत नहीं पता है या फिर असलियत से अनजान हो पड़े हो? तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? उसको जो क्या खाते इंडिया का है, गाते दूसरे देश का है? सोशल मीडिया पे हो कि नहीं ये पहले बताओ। अरे उनकी पिक्चरें वहाँ वायरल हुई पड़ी है अंडरवर्ल्ड के साथ। Exactly. अब ऐसे लोगों को नीचे वाले क्या सद्बुद्धि नीचे वाले के समझा, ऊपर वाले भी समझा के थक जाएंगे ऐसे गधों को। और रहा सवाल ये लाल सिंह चड्ढा का, इसको तो फ्लॉप होना जरूरी है। जब शाबाश मिथु के टाइम पे कोई परिंदा नहीं आया देखने, तो ये क्या है? कौन है आमिर खान? वो आमिर खान जिसकी फोटो शाहिद अफरीदी के साथ है, वो शाहिद अफरीदी दिन भर इंडिया को गाली देते रहता है, क्रिकेट फटर्निटी का होकर भी गाली देता है इंडिया को। तो आपकी दोस्ती यारी ऐसे लोगों के साथ है, तो आप किस भक्त के देशभक्त बन रहे फिर रहे? सिर्फ पर्दे पे देशभक्त बनना है आपको, असल जिंदगी में तो आप हैं देशद्रोही। बिल्कुल सही कहा। एंड यस, देशद्रोही, एंटी नेशनल और अपनी ही खाने की थाली में छेद करने वाले और अपने ही लोगों को बर्बाद करने वाले, ये हैं हमारे चर्सी वुड, ड्रगी वुड, बॉलीवुड के लोग। अभी कॉमनवेल्थ गेम में इतने मेडल्स आ रहे हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड आ रहा है, एक ट्वीट बता दें आप उनकी,
अक्षय कुमार अगर कर भी रहा होगा तो अपने गुड बुक्स में आने के लिए कर रहा होगा। अरे वो तो मूवीज बनानी होगी ना उसको, तो अब देख रहा होगा ना, अब अगला जो उसने बनाना होगा तो वो भी तो देख रहा है कौन सा वाला स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर मैं मूवी बना सकता हूँ। एग्जैक्टली। बिल्कुल। Very true, very true. You know, propaganda, you know, whether PR तो है ही है, paid PR, plus whatever they can, you know, say positive things. They try to win our hearts or emotionally, you know. And हम लोग patriotic, हम हमारे लिए देश important है। यहाँ जो brave लोग आके गए हैं, कुछ अच्छा करके गए हैं, honest लोग हैं, उनके ऊपर वो बना के तो हमारा दिल जीतने वाले हैं। But we will not give in. It's Bollywood boycott forever. Correct. Absolutely. Thank you आयुष। एंड यस, जैसे अभी आपने कहा स्पोर्ट्स राइट, यू नो जो जेवलिन थ्रोअर है हमारे, क्या नाम, नीरज चोपड़ा। मैं चोपड़ा तो याद आ गया था, नीरज, हाँ नीरज चोपड़ा। आई एम श्योर नीरज चोपड़ा की मूवी बनाने के लिए तैयारी हो रही होगी अभी, और बहुत सारे और यू नो रेसलर्स हैं और बहुत है, और उनका तो बस चले तो यू नो वो लेडी रेसलर भी बन जाए। अक्षय कुमार को तो बस मूवी चाहिए, सो ही डजंट केयर। बट आज मैं आई एम गोना शेयर दैट क्लिप ऑन सोशल मीडिया। कल या परसों की बात है शायद, जब ये बहुत ही गुड बॉय लुक लेके एयरपोर्ट पे एक बड़ी सीनियर सिटीजन को यू नो हक करते हुए, ये वही स्टार्स और ये अपने आप को जो कहते थे यू नो व्हाटएवर सुपरस्टार्स बॉलीवुड के, जब ये सिक्योरिटी से अपने आप को कवर करते हुए जाते थे, किसी के पास नहीं जाते थे। अब क्योंकि इनको जरूरत है तो अब ये बड़ों के पैर भी छुएंगे। और एक टाइम पे जब इनकी अभी रिसेंटली, अभी तो लास्ट ईयर की बात है या इसी ईयर, आई एम फॉरगेटिंग, बट इनकी मदर की जब डेथ हुई थी, द वेरी नेक्स्ट डे, थर्ड डे एक्चुअली, सेकंड या थर्ड डे, एयरपोर्ट, प्राइवेट एयरपोर्ट के बाहर फोटोग्राफ्स खिंचाते हुए दिख रहे थे और कह रहे थे कि हाँ यहाँ धूप में पे आ जाता हूँ तो मेरी फोटो खींच लो। सो ये तो इनका हाल है, तो इनको क्या यू नो क्रेडिट, तुम हमारे एज नहीं है। ऑलराइट, और लोग आ गए हैं, सो थैंक यू सो मच आयुष। ऑलराइट सिमी जी, प्लीज गो अहेड। I just want to add something. Talking Sure. about javelin, Yeah. I was मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ती थी, दिल्ली से वहाँ गई थी। javelin में फर्स्ट आई, शॉर्टपुट में सेकंड आई और डिस्कस में थर्ड आई। स्टेट लेवल पे रोहतक गर्ल विमेंस कॉलेज थी मैं थी, तो हमारे स्टेट का कुछ वो क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ से, जालंधर से सब लोग आए हुए थे। and I saved that paper, and if you look at the year you will not believe, way back when. लेकिन मैंने वो रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी का, कहाँ पंजाब का पेपर। तो एनीवे शेयर करें आप, मुझे डीएम में जरूर शेयर करें। आई लव टू सी। श्योर चलो। ऑलराइट, प्लीज गो अहेड। चलो जी, हम जानी सार बोलते हैं। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जानी सार है जानी सार, तेरे प्यार पे मेरे यार, जानी सार है। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी, तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा ओ यारा। तेरी बेरुखी सी है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी,
के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। हर हर महादेव, ऐसे सारे को जस्टिस मिले, हम लड़ते रहेंगे एंड वील ऑल डू इट टुगेदर। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सबको नमस्ते। Namaskar. Thank you so much, Simiji, and thank you everyone for joining in. Let's continue Boycott Bollywood and let's continue to boycott Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan, and many more. जितनी भी ये मूवीज आ रही हैं सो कॉल्ड, जो अपने आप को कहते तो इंडियन है पर एंटी इंडियन और एंटी नेशनल सारी हरकतें हैं इनकी. एंड नॉट टू फॉरगेट, दे डिड नॉट इवन स्टैंड फॉर सुशांत. So justice for Sushant Singh Rajput, boycott Bollywood, and boycott Laal Singh Chaddha. Take care. Jai Hind, Jai Bharat, and I will see you guys very soon. Bye-bye. हर हर महादेव। Har Har Mahadev.